Dear students, in this lecture, I will show you some of the important practicals of Python programming. Kindly go through all the programs and the questions that I will ask you to complete, means the few practical tasks will be there you have to do. And also, whatever the practicals I will show you, do all of them. Don't skip any of these programs. Let's start. I'm sharing the screen. You can see here, right? Okay. So what are the variables in Python? We know variables are the names used to store data values in memory. Okay, memory में values रखने के लिए हम जो use करते हैं वो है variables. Like x is assigned a value 10, name is assigned the value Rahul. So x stores integer value 10, name stores string value Rahul. Okay, so the simple program for that is, just a minute. Just a minute, I'm going to the, okay. So this one, the program, X is assigned 10, name is assigned 2. So I'm running it. So X is a variable of the type integer, name is the variable of type Rahul, right? Now, global variables. So X is 10, X is 100. This is a global variable because it is declared outside this function. Our function is this, right? So global variable is the one which is declared outside the function. The function so can access the global variable, then the value is printed both inside and outside the function. Right, inside the function, because of this print statement inside the def, right? And then outside the function, because of the print statement. So here x is the global variable, right? And similarly, I'm running this. So you can see here inside function 100, outside function 100. Please take screenshot of the programs that I'm showing you. Each one of these programs you have to do, you have to understand the logic. Viva, in Viva, basically the question are on logic, right? Then difference between read line and read lines. Read line means reads one line at a time, while read lines means read all lines at once. Okay, so remember that. And then read line returns a string, while read lines returns a list. Read line is used in loops, while read lines is used in or when all the lines are needed. Okay, you can see here. Now program to count characters in a file. This is the next. This is the program. Programs to count the characters in a file. So एक sample file ले लो, whatever the file you have. I have this sample.txt, the txt text file, and I have kept it in R. So that is read mode. Data file read. So file को read करके हमने data में रखा. Count len len, and we pass data here. तो जो len function है वो क्या करेगा? Whatever the numbers of the means characters are there, that will be counted and it will be stored in count, and ultimately we are showing the numbers, okay, that count. Then file dot close, तो फाइल क्लोज हो जाएगा. तो ये है आपका फाइल, ठीक है, ये देख सकते हो demo.txt data file read here. तो हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाइथन, ये था हमारा डेमो टेक्स्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है, और इसमें पूरा काउंट किया तो आपको मिला 29. तो कैसे काउंट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, like that. These are the 29 characters. Then remember, open is for reading or opening the file, sorry. Read for reading the complete file code. Then open मतलब open करना है file को, read करना है, alien counts total characters, and finally we close the file using close.
पूरा याद रख लेना, ठीक है। देन पैटर्न प्रोग्राम, आप लोग जानते ही हो पैटर्न मतलब स्टार, और एक पैटर्न का शेप लेते हैं आउटपुट जिसको आपको प्रिंट कराना पड़ता है, एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, लाइक दिस वन यू कैन सी हियर। कितने लूप हमने यूज किए हैं? फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 to 6, रिमेंबर द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में तीन पार्ट होता है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट, राइट, and then आपका the where to stop and how many values to be incremented or decremented। यहाँ पे हमने 1 and 6, सो 1 से स्टार्ट होके 6 तक रुक जाएगा, और कोई भी मेंशन नहीं किया इंक्रीमेंट कितना होगा, तो वो 1 होगा। देन जे इन द रेंज 1 to i+1, जब 1 रहेगा आई का वैल्यू, फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपका जो फॉर आई इन रेंज 1, और 1 के लिए ये फिर से ये पूरा काउंट होगा, 1 to i+1, 2 तक, तो 1 प्रिंट हो गया, तो 2 तो 2 तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमेशा रेंज में सपोज हमने एन दिया है 6, तो 6 तक नहीं, एक्चुअली वो 5 तक ही चलता है, ठीक है। तो ये 1 प्रिंट हुआ, सेकेंडली ये आई इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, राइट। तो ये 1 to y+1, दैट इज 2+1 3, तो 1 2 तक होगा। तो सिमिल, सो फर्स्ट में 1 आया, सेकेंड में 1 2, थर्ड में 1 2 3, फोर्थ में 1 2 3 4, एंड लास्ट में 1 2 3 4 5, बिकॉज 6 तक नहीं होगा, उससे पहले तक, ठीक है। सो यू कैन सी द आउटपुट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। देन, तो यू गॉट इट, आउटपुट लूप कंट्रोल्स द रोज, ठीक है। आउटर जो लूप है, आउटपुट बोल रहा हूँ मैं, आउटर होना है सही, ओके। बहुत सारे क्लासेस हो गए, सो दैट्स व्हाई एनीवे, फॉर जो आउटर लूप है वो रोज को कंट्रोल कर रहे हैं, और इनर लूप जो है इट प्रिंट्स द नंबर्स फ्रॉम 1 to करंट रो नंबर, एंड प्रिंट्स द वैल्यूज इन सेम लाइन, एंड प्रिंट मूव्स टू नेक्स्ट लाइन। ये हो गया पैटर्न प्रॉब्लम। आपको 1 की जगह पे सपोज स्टार प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये कर सकते हो। So what are the difference between list and tuple? List is mutable, tuple is immutable। list को हम चेंज कर सकते हैं, tuple को नहीं कर सकते। list ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये काली, ये ब्रेस, नॉट काली ब्रेस, ये ब्रेसेस मतलब आपका पेरेंथेसिस वाला ये जो सिंबल है, ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन बी मॉडिफाइड, कैन नॉट बी, एंड दिस इज स्लोअर, टुपल इज फास्टर। तो क्वेश्चन है, सपोज कन्वर्ट लिस्ट इनटू टुपल, कैसे करेंगे हम? ये है आपका लिस्ट, ए तो लिस्ट है, आपको दिखाई दे रहा है 10 20 30, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। टुपुल में करना है तो क्या करना है, टुपुल ये फंक्शन यूज करना है, उसको पास कर देना है वैल्यू ये लिस्ट, और तब ये टाइप कास्टिंग होके लिस्ट जो है वो टुपुल में कन्वर्ट होगा, और ये हमने रख दिया टी में, तो हम अल्टीमेटली टुपुल को प्रिंट कर दे रहे हैं। सो आई एम प्रिंटिंग इट, सो यू कैन सी 10 20 30, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाँ, तो आउटपुट टुपुल हो गया, मीन्स इट बिकम्स नाउ what? Immutable. Similarly, difference between write and append. Write overwrites the old data, while append क्या कर रहे हैं? Append adds new data at the end. Write पहले का data को पूरा overwrite कर रहा है, while append overwrite नहीं कर रहा है, append सिर्फ end में उसको add कर रहा है। और राइट के लिए हम जो मोड यूज करते हैं, जैसे रीड के लिए आर था, राइट के लिए डब्ल्यू, और अपेंड के लिए ए, ठीक है। एक प्रोग्राम हमने बनाया, ये देख सकते हो, ओके। डेमो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू, राइट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, मतलब अभी जो डेमो टेक्स्ट में था अभी वो हो गया क्या, जो भी था डेमो टेक्स्ट में वो अभी कन्वर्ट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद क्लोज कर दिया, ओपन करने के लिए अभी ओपन किया फिर से डेमो टेक्स्ट, जो जिसमें अभी सिर्फ आपका वो है, और उसमें वो है मतलब हेलो वर्ल्ड है सिर्फ, और उसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है, अपेन किया है, तो ये लास्ट में जोड़ जाएगा, जो हेलो वर्ल्ड के बाद आ जाएगा वेलकम टू पाइथन। अब उसके बाद फिर से हम उसको रीड करके प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रिंट हो गया आपका हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन। समझ में आ गया? तो डब्ल्यू ओवरराइट ए अपेंड्स। फिर से अल्फाबेट पैटर्न याद रखना, स्मॉल ए और कैपिटल ए इन सबका आस्की वैल्यू अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सो आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल इज 65, सो 65 से स्टार्ट होता है। अभी हमने 65 से रूप को स्टार्ट किया, ये चलेगा 70 तक, ठीक है। ए जैसे कि ए फॉर 65, बी फॉर क्या होगा 66, लाइक दैट। सो आउटर लूप फॉर आई इन रेंज 65 to 70, फॉर जे इन 65 to i+1,
प्रिंट कैरेक्टर जे, तो ये जो वैल्यू होगा ना, जैसे कि जे बन गया 65 के लिए 66 और 65 और 65 तक चलेगा। तो कैरेक्टर मतलब वो 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा जो कि आपका ए है। नेक्स्ट लाइन में 66 तक चला, 65 66 दैट जिसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा ए एंड बी, लाइक दैट। तो आउटपुट आ जाएगा ऐसा। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द प्रोग्राम, this is the output. I think no confusion. Do it. So I'm loop queue use करते हैं. Why loops are used? Loops are used to execute a block of code repeatedly until a condition becomes false. ये पूछता ही है. It is very favorite question. Why we need to use loop? Because loops helps us to fewer the number of codes lines, because it is used to execute a block of code repeatedly until a condition becomes false. बार बार लिखना नहीं है. तो हमें सपोज राहुल को प्रिंट कराना है बार बार, और आई इन रेंज 5 मतलब 0 से लेके 4 तक, तो 5 बार चलेगा, 5 बार ये प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. और आई देखो ये मैं कर रहा हूँ, 5 बार होना चाहिए. 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स राहुल प्रिंट हो गया. तो 5 बार प्रिंट 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 लिखते हैं, इससे ज़्यादा हमने ये लूप बना दिया. ठीक है. और लूप में हमेशा रेंज फंक्शन यूज करते हैं. तो for loop repeats fixed number of times, ये याद रखना. while loop runs while condition is true. ठीक है. Now, string indexing versus string slicing. इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग. स्लाइसिस मतलब टुकड़ा करना होता है, इंडेक्सिंग मतलब उसमें इंडेक्स रहता है. सो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इट एक्सेस सिंगल कैरेक्टर, while string slicing it accesses multiple character. String indexing uses one index, string slicing uses range, like s0 s1 they are the index, and slicing s1 to 4 like that. ठीक है. तो हम करते हैं एक प्रोग्राम. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्लाइसिंग यूज किया है 0 से 3 तक, 0 1 2, राइट. तो ये 5 PYT तक आ गया. सो देयर आर द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड हियर, सो यू हैव गॉट द आउटपुट PYT. करेक्ट. Similarly, let me show you another one. Here you can see from 2 to 6 we are using. So 2 means how, what is the value? 0 1 2. So this 3, right? And up to 6. Okay, 2 3 4 5. 6 means this is the one before 6, that is T, 5. So TH1 is printed. Similarly, one more program you can hear, you will see that I'm taking -1, so it is starting from here, and 0, it means O, HT, like that. So everything is being reversed. Right? So this value -1, it reverses the string. Similarly, I am taking one tuple. Okay, so this is the tuple I am taking from 10 to 100. This value we cannot change. Right? This is immutable. And for the middle one, we need to first find out the how many values are there. So for that, I am using len function, and I pass this tuple. So the number comes like this. Say length is 10, right? Then we divide it by 2. So this will show you give you the middle element index, and then printing it. So here middle element is 60. 10 elements are there. 1 2 3 4 5 6. 1 to this one. Okay. So this is clear. And then largest, smallest one, I can show you another one. This is the list we are taking numbers 12, 40. These are the list numbers. Now I want to find the maximum, so that's why I'm using the max function. And then I want to find the smallest one, so that's why I'm taking this mean. And then we are adding this number using sum. So it is as simple as it is.
So for that, we have to use sometimes import match, because in the match module, you will get this type of mathematics functions already there. You just need to call and use. It's clear? You can take a screenshot. Okay. Now, if it is key value paired, so you can see here, Rahul, see here 85. This is the key, this is the value. So whenever this type of key value pairs are there, then this is an dictionary. So we want to find out the maximum number. So student with the highest marks, key students.get, and students, from that we are taking max, and then ultimately we are printing the highest one. So how we are doing that, you can see here is the max, we got it. Then highest value, what is the highest value, and what is the marks got by that, right? Marks is 92, and highest marks here 92 is for Amit. So Amit is the index, right? Because in Disney we define our own customized index. Like in default case 0, 1, 2, these are the index ना. यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो we take the customized index. So we get the value 92 for the index Amit. So that's why this is the answer. Now we need to extract the mobile number using regular expression. I told you that we use regular expression for pattern recognition, right? So उसके लिए हम use क्या करेंगे, RE module, import RE, जो भी text number text दिया हुआ है, suppose my numbers are this, यहाँ से हमें मोबाइल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, राइट? सो हमारे लिए पैटर्न मोबाइल नंबर रहेगा, जो जो कि 10 डिजिट होना चाहिए. डिजिट मीन्स डी, right? Numbers. How many numbers should be there? 10, right? So this is the text numbers. We have defined the pattern like find all are D10 text. From where? Text. यहाँ पे हमें जो हमने जो डिफाइन किया है, ये है हमारा पैटर्न D curly brace 10. So 10 digits should be there, and this is a regular expression, right? So कहाँ से ले रहे हैं हम? We are taking it from text. Ultimately, this will be extracted and it will be stored in numbers, and then we are printing the numbers. So that will be coming like a list. These are two numbers. So very interesting program with this one. Next one is for the lambda, right? So lambda is a kind of anonymous function, one-line function that we use to sometimes as a shortcut and sometimes to make the things faster. But it is anonymous, it has no names. याद रखना, ठीक है? So for that we use the keyword this lambda. So first we define these numbers. ये number हमने divide किया, ये list है. उसमें जो हमने डिफाइन किया है, से लिस्ट मैप लैम्डा एक्स टू एक्स स्क्वायर. तो जो भी एक्स होगा उसको एक्स स्क्वायर में मैपिंग होके वो नंबर्स में आ जाएगा, एंड देन वी आर कीपिंग इट स्क्वायर, एंड देन अल्टीमेटली वी आर प्रिंटिंग इट. तो मैपिंग हो गया लैम्डा एक्स टू एक्स स्क्वायर numbers, and this being converted into list with the keyword list. So list function इसको list में convert कर देगा. So the ultimately output will be a list, and then we are printing it. Clear? Similarly, one more for the Fibonacci. Here, the value will be like 0, 1, then 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, like that. So first we have to define this first two, 0, 1. So a b comma b is respectively 0 comma 1, and for I the range n, that n range you have to define how many numbers we want exactly. Say we want up to 10, then we are defining it as n is equal to 10. यहाँ हमने 10 तक करिए तो हमने 10 तक हमने डिफाइन किया. और ये जो yield, can anybody tell me why when we use yield? Remember decorators, generators, we have gone through generators, we studied, right? बहुत important concept है, एक बार recall कर लेना. तो for I in range n, yield a comma b is assigned b comma a plus b. ये तो हो रहा है ना. अभी ये जो है वैल्यू, ये हो गया b का जो वैल्यू है, और इसके बाद जो वाला वैल्यू जो है 2 क्या है, ये इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू मिला है वो हो गया.
ठीक है। सो फॉर नाम इन फाइबोनाची 10, 10 तक चलेगा, नाम कमा एन दिस। ठीक है। सो दिस इज फॉर फाइबोनाची सीरीज। You got it. This is the Fibonacci series. You can take screenshot. So here yield creates a generator values one by one. Fibonacci numbers are generated efficiently one by one. क्यों हो रहा है ये जनरेटर yield के कारण, एक के बाद एक प्रिंट हो रहा है। अब फिर से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम से एम्प्लॉय क्लास प्रोग्राम। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं और क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। इनिट क्या था, एक कंस्ट्रक्टर था, और इसमें हमने डिफाइन कर दिया सेल्फ मीन सेल्फ पॉइंटर पॉइंटिंग टू इटसेल्फ ओनली, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी, सेल्फ डॉट नेम नेम, सेल्फ डॉट सैलरी सैलरी। तो ये हो जाएगा आप डिफाइन करते वक्त। डिस्प्ले के लिए आईडी सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी आपने जो क्लास डिफाइन किया है उसी में वो, उस एम्प्लॉय आईडी में वो वैल्यू स्टोर रहेगा। तो हमें आईडी डिस्प्ले करना है तो सिर्फ सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। सिमिलरली नेम डिफाइन कर, नेम को प्रिंट करना है तो सेल्फ डॉट नेम। सिमिलरली सेल्फ डॉट सैलरी फॉर सैलरी। तो ये हमने क्लास का टेम्पलेट, क्लास हमेशा एक टेम्पलेट की जैसे काम करते हैं। दिस इज वेयर वी डिफाइन ऑल द requisite functions variables. Ultimately, whenever we need to use, we can use it by creating an object is the instance of a class. So here we are defining e1 as one object of employee, and we have passed this value like employee ID 101, name Rahul, salary 50,000, self डी के रखा है तो automatically ये assign हो गया है। Similarly E2 another employee with these values, then we are displaying it। ठीक है। तो हमने क्लास डिफाइन किया एम्प्लॉय और उसका ऑब्जेक्ट्स E1 एंड E2। ठीक है। सो रिमेंबर init for initialization of the object data, display for displaying the values. So I'm showing you the program. This is the program. Ultimately, these are the output we got. ठीक है। Okay. Then character frequency using dictionary. तो उसके लिए एक टैक्स लिया पाइथन, फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन करके रखा है कर्ली ब्रेस में। फॉर सी एस इन टैक्स, कैरेक्टर जो भी है टैक्स में, फ्रीक्वेंसी सी एस में हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट सी एस comma 0 plus 1. So get ch comma 0 initializes spacing keys with 0. Dictionary stores character frequencies. तो अल्टीमेटली इसको प्रिंट कर दिया हमने। ठीक है। समझ में आ रहा है वैल्यू। पी के लिए क्या होगा, पी के लिए 1, हीरो हुआ तो वो 1 हो गया ना, तो वाई 1, तो टी यहाँ पे तो सभी 1 ही होगा, एक ही बार रिपीट हो रहा है। लेट मी शो यू दिस। ओके, समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स और सी एज इन टेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी में हमने देखा फ्रीक्वेंसी गेट सी एज, ये सी एज कितने बार हो रहा है, अगर एक बार भी नहीं हो रहा है तो 0, नहीं तो +1 काउंट होगा। यहाँ पे सपोज मैंने ये कर दिया तो पी अब 3 टाइम्स रिपीट हो गया, तो 3 टाइम्स 0 के साथ +1 तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली सपोज आई हैव पुट दिस, so this O becomes 2। ठीक है। Is it clear? I hope it is clear। ठीक है। So this next stores the character frequencies and this initialize the missing values। So ये इजी है, एक बार फिर से देख लेना। टैग्स डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया फॉर सी एस इन टैग्स। फ्रीक्वेंसी सी एस में हमने फ्रीक्वेंसी गेट सी एस डॉट 0 + 1, एवरी टाइम ये जितने बार भी टैक्स मिलेगा उतने बार वो ऐड होता जाएगा, बाद में हम फ्रीक्वेंसी पिन कर देंगे। ठीक है। हम डिस्ने क्यों बोला है, क्योंकि डिस्ने की वैल्यू पेयर्स है, तो यहाँ पे ये की हो गया, उसका वैल्यू 1 हो गया, वाई की हो गया, ठीक है, उसका वैल्यू 1 हो गया, लाइक दैट। ठीक है। गॉट इट। देन ईमेल वैलिडेशन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। लेट मी शो यू। ये है प्रोग्राम। देखो ईमेल हमने पहले डिफाइन करके रखा, आपसे लिया मतलब यूजर से लिया विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक द इनपुट, यू नो दैट, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब पैटर्न हमने डिफाइन किया, रेगुलराइजेशन पैटर्न क्या होना चाहिए ये याद रखना। वाइल्ड कार्ड्स आई हैव
एक्सप्लेन इन द क्लास व्हाट आर द डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स, राइट। डब्ल्यू के लिए क्या है, डॉट क्या है, एट द रेट। तो इसमें मेन इंपोर्टेंट एट द रेट होना चाहिए, उसके बाद कितना कैरेक्टर्स। ठीक है। तो ये सारे चीज हमने वाइल्ड कार्ड के थ्रू डिफाइन किया। इफ आर ई डॉट मैच पैटर्न को ईमेल, अगर पैटर्न के साथ मैच हो रहा है ईमेल, जो भी ईमेल आपने प्रोवाइड किया, देन इट इज वैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो मैंने आप लोगों को वाइल्ड कार्ड्स दिखाया था, जस्ट आई एम शोइंग यू व्हाट वाइल्ड कार्ड्स आई हैव ऑलरेडी शोन इन द क्लासेस। तो उसको एक बार लिख लेना, ठीक है। और उसके साथ मैच हुआ, जैसे कि अभी हमने दिया है, लाइक दिस वन एंटर, राइट। डॉट मैच हो रहा है, राइट, विथ एनी नंबर ऑफ वर्ड्स मैच हो रहा है, सो दैट इज गुड। तो दिस इज वैलिड। इनवैलिड एक ले लेते हैं, नमिता एट द रेट 11। ये इनवैलिड हो गया बिकॉज डॉट इज एब्सेंट। ये जो डॉट डिफाइन करके हमने रखा है, डॉट इज एब्सेंट एंड बाद में कुछ भी नहीं है इसमें। शो यू regular expression, show you just a minute। ये देखो, this one I have shown in your class। You again take some screenshot, dot for matching any single character except a new line. This symbol, what is for start of the string, dollar symbol, and or the matches the end of the string. Star, zero or more occurrences, plus one or more occurrences, question mark, zero or one occurrence, zero or one, not more. NM matches between N and M occurrences. D for matches any digit between N, 9, that's 10 digits are there, including zero, right? Then W matches any word character, letters, number, underscore, whatever. And this says matches white spaces, tabs like that. Then these are the examples I have shown in the classes. Okay, never mind, you already did it. No problem with that. So ऐसे ही हमने डिफाइन किया, अब दिखाई दे रहा है, ये हैश ने n बताया है, डॉट सिंबल डिफाइन किया है, डब्ल्यू एनी और हो सकता है, एनी और कुछ भी हो सकता है, एट द रेट होना चाहिए, प्लस करके लिखा है ना, एट द रेट प्लस इनको जोड़ रहा है, और एट द रेट अगर एब्सेंट होगा तो ये नहीं दिखाएगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, वन से सिमेल, ये क्या हो जाएगा, एट द रेट नहीं है तो इनवैलिड। गुड। देन हमने एक बैंक अकाउंट का क्लास बनाया, क्लास बैंक अकाउंट, इनिशियलाइज किया बैलेंस, डिपॉजिट अमाउंट जो भी हो रहा है, प्लस हेल्प द बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट बनाए, बैलेंस प्लस अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो हो जाएगा तो कितना डिपॉजिटेड हो गया ये दिखा दिया। विड्रॉ किया, हेल्प कमाए अमाउंट, जो भी विड्रॉ करोगे क्या होगा, जो बैलेंस है उससे माइनस हो जाएगा, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्फ बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, इसका मतलब होता है सेल्फ बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है। उसके बाद करंट बैलेंस डिस्प्ले कर दिया है, तो अकाउंट हमने लिया 5000, तो 5000 जो है ये बैलेंस में इनिशियलाइज हो गया, डिपॉजिट किया 2000, मतलब बैलेंस प्लस 2000 हो गया, विड्रॉ किया 1000, तो 7000 माइनस 1000 क्या होना चाहिए, 6000, सो इट इज डिस्प्लेइंग लाइक दैट, ठीक है। सो बच्चों हमने सारे प्रोग्राम्स कर लिया, ठीक है। अभी उस प्रोग्राम्स में आप लोगों को दूंगा, यू हैव टू डू, राइट। ये तो सारे प्रोग्राम्स करना ही है, बार बार जितने बार भी हो सके रिपीट करो, और स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में दिखाओ, तब मुझे बिलीव होगा कि आप लोग कर रहे हो। लिख लेना कॉपी में अच्छे से, ठीक है। प्लीज राइट द प्रोग्राम, डू द प्रोग्राम रिपीटेडली, डू द प्रोग्राम्स, प्रैक्टिस होना जरूरी है। उसके बाद जो मैंने कुछ प्रोग्राम्स रखा है, स्टूडेंट टास्क, ठीक है। सीआर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सबको तो लेना ही है।
आप लोग क्लास में शेयर कर देना। ये सारे प्रोग्राम्स आपको अभी करना है, सिमिलर टाइप का प्रोग्राम इसे है कुछ। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर से 4 तक स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? गुड। आप लोग 5 से 7 तक, 5 से 7 तक स्क्रीनशॉट। गुड। 8 से 10 तक। Good. Now you do this practical. Write the practicals, all the in the class, whatever I have taught, इन सबको भी लिख लो एक बार कर करके, और बाकी जो 10 प्रोग्राम दिया है ये भी कर लो और मुझे दिखाओ कल तक। Okay, by tomorrow you have to finish and you have to show all the programs. Right? Thank you. That's the end of the class. I hope कुछ डाउट नहीं है, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे। Thank you.